हेलो एंड वेलकम बैक। सो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सिंपल ऑटोमेशन टास्क जो है उनको रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन टास्क को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है या कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। और आज की वीडियो के अंदर हम गिटहब के अंदर हम अपनी किसी भी वेबसाइट को कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसको कैसे लाइव कर सकते हैं, उसको हम शो करेंगे। मैं एक वेबसाइट ऑलरेडी अपनी लाइव कर चुका हूँ गूगल के अंदर, मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो आपके सामने ये है, ये वेबसाइट है जो गिटहब पे ऑलरेडी लाइव है। तो ये आप देख रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो या अपनी वेबसाइट गिटहब पे लाइव कर सकते हैं एंड देन यू कैन शेयर टू एनीवन। इसको कैसे करते हैं, इसका बहुत सिंपल तरीका है और आज की वीडियो के अंदर हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इसको करने के लिए आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। गिटहब के अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, हम गिटहब पे जाके, यानी आपको अपना गिटहब पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा देन आप इस प्लस आइकन क्रिएट करके न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट की थी इस नाम से, portfolio.github.io, आपको एज इट इज टाइप करना होगा। अगर मैं आपको दोबारा शो करूं तो ये है न्यू रिपॉजिटरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया हुआ था, portfolio.github.io एज इट इज टाइप करना होगा। ठीक है, since I've already done this, the repository portfolio.github.io already exists on this account, so it is not allowing me to do so, but I can create another portfolio. If I type portfolio2.github.io, I can easily do that. So जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वी वांट दैट टू बी पब्लिक, इफ यू वांट इट प्राइवेट वी कैन डू प्राइवेट। एंड देन यहाँ पर हम इसका लाइसेंस चूज कर सकते हैं एंड देन वी गोइंग टू क्रिएट द रिपॉजिटरी। इफ यू वांट टू ऐड अ रीडमी फाइल that further tells about what your website is going to be, or maybe any other details related to your website, you can add a dot readme file there and then you can do it. Okay, and you can go ahead and create a repository. Once you create a repository you will have something like this. Okay, आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक रीडमी फाइल ऐड हो जाएगी। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, आपके पास आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। मे बी फॉर एग्जाम्पल any folder that you may want to actually create, you can create it here. हम जैसे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं portfolio2। ठीक है, आपको जब ये फोल्डर क्रिएट होगा आपको इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर या किसी भी एडिटर के अंदर आप ये फोल्डर खोलेंगे और इस पे गिट को सेटअप करेंगे। गिट को सेटअप करने के लिए कुछ कमांड्स होती है और वो आप इजीली मैं आपको, यानी जब साथ साथ करता जाऊंगा तो आपको शो करता जाऊंगा। सबसे पहली कमांड होगी गेट इनिट। हम उस फोल्डर के अंदर नेविगेट करेंगे और उसमें टाइप करेंगे गेट इनिट। ठीक है, जैसे ही टाइप भी करेंगे तो यहाँ पर या उस फोल्डर के अंदर git initialize हो जाएगा। Will be initialized in the folder where you run this command. So let's move forward, but in order to make sure that git initializes the folder, you need to have git downloaded to your machine and installed. In order to download git, you can do this using this URL, git-scm.com/downloads. You can download it for Windows, and if you have Mac OS or Linux operating system, you can do that following the links that are visible to you. Now मैंने चूंकि ऑलरेडी कर लिया है, गिट पे डाउनलोड कर लिया है और गिट को इनिशियलाइज भी कर लिया है। अब मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग भी ये कर सकते हैं कि वेदर गिट इंस्टॉल प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके या टर्मिनल पे जाके आप लिखिए git dash dash version. So if this command runs, so you will get to know what is the version of git that you have installed.
and but if this command gives an error, it means Git is not properly installed, and in that scenario you have to do the debugging of what's the reason that Git is not installed properly. आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे भी कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं ऑन माई चैनल, तो आप सब्सक्राइब भी करें। डेफिनेटली यू कैन गेट कनेक्टेड और मैं आपको जो आपका प्रॉब्लम हो वो उसको रिजॉल्व करने के अंदर डेफिनेटली इट कुड आई कुड बी एंड हेल्प यू। अच्छा, आफ्टर दैट जब आप गिट रन कर लेंगे, अभी ये करंटली जैसे फॉर एग्जांपल ये फोल्डर ऑलरेडी मैंने गिट पे पब्लिश किया है, आप भी अपनी वेबसाइट्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, और उसके अंदर अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग द इमेजेस। सो ये ब्लॉग पोस्ट सारा है, उसकी एक चीज़ इमेज करनी थी जो जिस इमेज का नेम ये है। फर्दर ये हमारे पास पोस्ट्री की इमेज थी, इसमें टेक्स्ट फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इमेज चेंज कर रहा हूँ। डाटा डैश एक्चुअली डाटा डैश एनालिसिस डैश एक्सप्रेशन डॉट png, so I'm going to select that image because this is the relevant image. The earlier image was not relevant to that post. So ठीक है, तो ये हमारा contact us form है, we have made the changes. अब हमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जब भी आप करोगे कुछ भी, आपने git को git init command is already run, ठीक है। After that you're going to set and add the git folder that you are looking to publish on git. So आप उसके लिए क्या कमांड ऐड करोगे, आप git add and the name of the folder। हमारे पास जो ये फोल्डर का नेम है, पहले मैं ये डायरेक्टरी की कमांड रन करके चेक कर लेते हैं। दीज आर द डायरेक्टरीज दैट आई हैव। मेरे पास जो इमेजेस मैंने चेंज की है वो इस इमेज फोल्डर के अंदर है, दिस इमेज फोल्डर। सो आई नीड टू add this to git that I'm looking to make changes. Git add img. Okay, so there are a few additional images within that, so I can quickly do that. So git add image. Now this image is already added, this folder is added, and whatever changes there in the folder are already added to the git versioning system. Now अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, git commit dash m and the commits. What am I changing? Updated images. Okay, so these are all the images that are updated and it has been added to this commit command. So after that अब मुझे इसको publish करना है to the GitHub folder so that these are reflected to the website. I can just command type git and push dash u origin and मैं अपने main branch के अंदर इसको push करूँगा, push dash u origin main। ठीक है, तो ये मैं कर लूँगा, और जैसे ही मैं इसको ये प्रेस एंटर करूँगा, इट इज़ गोइंग टू पब्लिश दैट टू द git folder and all of them are published to the GitHub. So हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। फाइनली क्या है, पुश डैश यू ओरिजिन मेन हमने ये अभी ऑलरेडी कर लिया है, और जब हमारे पास ये अपडेट हो जाएगा तो हमारे पास ये आ गया कि these have all been uploaded. Now I can directly go to my repository and check out if these have been published or not. I can just refresh this page and you can see here the image folder is updated just 1 minute ago and these images have already been published. I can go to the website, just reload it, check it, have been published or not. Let's see that. That's taking to the blog page, and if we check out whether the images have been updated or not. Okay, images have been updated. We just saw that it's being updated just a minute ago. If I go into the image folder, I can see these images, but the issue is it's not updated to the website. You can see here these were the old images. Why it's not updated to the old images? Because this code is not updated there. So I also needed to add that code and publish it to the Git. So I'm going to
Okay, git add index.html. I'm going to add it, and then I'm going to commit this code, updated code, and then I'm going to push that to the main branch. And there it is pushed, and it's done. So I just need to refresh the images again. I can also check this index.html file is just updated now, and the images would also be just getting updated. So there must be a deployment going on there. If I go to settings, go to pages, and there from pages, it says that the site was deployed just 3 minutes ago. You can see here the images are updated now. So these are the relevant images. I hope this is clear. अच्छा, आप भी अगर कोई भी अपनी वेबसाइट या कंटेंट को गिटहब पे पब्लिश करना चाहते हैं, अपना ब्लॉग पोस्ट को या किसी भी चीज़ को, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू नीड एनी हेल्प। और आप अगर जैसे अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्रिएटेड अ कॉन्टेक्ट फॉर्म like here this, and you want if any of your users or a visitor wants to fill the form and you want that data to be emailed to your email with just send message button, all these details, तो उस सूरत के अंदर हम क्या चीज़ें करेंगे या क्या अपडेट्स करेंगे, what would be the process, so that would be the content of our next video, so stay tuned for 5 minutes automation with technology. Thank you.